Hello and good evening everyone. Welcome to this live session. So in this live session we are going to see the most important news articles of the Hindu through multiple choice questions for Prelims 2019. These questions have been made from the Hindu plus the PIB. These are the two most important sources for current affairs referred for UPSC Civil Services Prelims preparation. So let's begin with it. Before that, I would like to tell you about Unacademy Plus and my courses on Unacademy. जिन लोगों को नहीं पता, actually I am taking the weekly The Hindu News Analysis course from today onwards. आज से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है. पूरे हफ्ते की न्यूज़, मंडे टू सैटरडे की जो न्यूज़ है, संडे की न्यूज़ है, सैटरडे और संडे को 2 से 3 घंटे में हम उसे कवर करेंगे इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, डूइंग द बैकग्राउंड चेक ऑल्सो एंड टेकिंग द फैक्ट्स एंड एनालिसिस बोथ ऑफ देम टुगेदर. सो इसको अप्लाई करने के लिए क्विक रिविजन कोर्स और ये सब जो कोर्सेज हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, यू कैन फाइंड ऑल माई कोर्सेज ऑन अनअकैडमी प्लस. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी को 1 मंथ, 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए, और कोड यूज कर सकते हैं जतिन वर्मा 71 फॉर getting 10% discount in the initial period. So this is it. Now question number 1, consider the following statements about India-Maldives relations. Number 1, India-Maldives conduct joint naval exercise called MILAB. Second, Maldives and India do not have a free trade agreement. Maldives and India do not have a free trade agreement. Which of the above statements is or are correct? तो ये आज के न्यूज़पेपर में था, ये कल के न्यूज़पेपर में भी, तो वहां से लिया गया ये क्वेश्चन. आप आंसर कर सकते हैं क्विकली. फर्स्ट का आंसर है आपका बी. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाज ऑन अ विजिट टू मालदीव्स. हमारे सुषमा स्वराज जो है विजिट पे थी. द एक्ट सेट्स अप एंटी करप्शन, सॉरी दिस इज अ मिक्सचर ऑफ इट. मिलान इज अ कांग्रीगेशन ऑफ लिटोरल, प्लीज इग्नोर दिस. इंडिया एंड मालदीव्स टेक पार्ट इन बाइनियल 8-day नेवल एक्सरसाइज मिलान. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, राइट. 8 day. और यहाँ पे क्या दिक्कत है? इंडिया एंड मालदीव्स, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. So this is correct here, right? So statement first is correct here. Milan is a congregation of littoral navies conducted biennially by Indian Navy under the aegis of Andaman and Nicobar Command. Maldives and India do not have a free trade agreement. However, Maldives and China entered into free trade agreement. So statement 2 is also correct. So answer iska तो स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट. तो आंसर इसका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. एम आई राइट? तो यहाँ पे या तो मिलान एक्सरसाइज है, यहाँ पे मिलाप दे रखा है, तो दिस इज द कैच. यू हैव टू बी दिस अलर्ट बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे मिलाप दे रखा है और यहाँ पे मिलान दे रखा है. मिलान इज करेक्ट, मिलाप इज रॉन्ग. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग हियर. सो दिस वाज द कैच. यू हैव टू बी अलर्ट. बी इज द करेक्ट आंसर हियर. ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट. 16 countries were invited in 2018 edition of exercise. कौन सी एक्सरसाइज? ये जो मालदीव्स में भी हो रही है. मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, ये सब. Maldives declined invitation for Milan exercise due to circumstances of a state emergency at that time. 2018 की जो एक्सरसाइज थी. Ties between New Delhi and Mail came under strain during the former Maldivian president Abdullah Yamin's 5-year rule. अब क्योंकि सरकार चेंज हो गई है तो चीजें ठीक है वहां पे. Now question number 2. Consider the following statements regarding circular migration. Circular migration or repeat migration is temporary. Generally, it is the repetitive movement of a migrant worker between home and host areas. Home and host areas में ये repetitive movement रहता है वर्कर का. तो ये क्योंकि वेस्ट बंगाल डेल्टा से जो माइग्रेशन हो रहा है उसके चलते ये क्वेश्चन है. ट्रिगर फैक्टर में बताते चले जाऊंगा साथ में. नंदिता, in order to allay the कंफ्यूजन, तुम लोग ध्यान से पढ़ो, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है. मिलान एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में है, यहाँ पे मिलाप दे रखा है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है. क्लियर? नाउ आंसर 2, क्वेश्चन टू आंसर नंबर 2. फर्स्ट रॉन्ग है केशव. आंसर करो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली प्लीज. सेकंड का आंसर है
A. An international study titled Delta's Vulnerability and Climate Change, जो आज हमने न्यूज़पेपर में कल देखी. DECMA reveals that economic reasons are precipitating factor for migration in India, Bangladesh, India Bengal Delta that comprises Sundarban. Circular migration or repeat migration is the temporary and usually repetitive movement of a migrant worker between home and host areas. It represents a pattern of population mobility of rural-urban migration. Population mobility of rural to urban. Statement 1 and 2 are thus correct, right? तो option हो जाएगा A. Third question पे आते हैं. तो usually it happens for the purpose of employment. Third question, Goa's official language is Konkani. Second statement, on December 19, 1961, Goa was liberated from the Portuguese. Third, the territory of Goa was formally integrated into the Indian Union after the passing of 12th Amendment Act to the Constitution of India. Which of the above statements are correct? A, 1 and 2, B, 2 and 3, C, 1 and 3, D, all of these. Third question का आंसर करें guys quickly. Please use the answer number also while answering. So is it fine now? The streaming is fine now. Sorry for the buffering issue. Isn't it fine now? So question number 4. Consider the following statements about sovereign gold bond scheme. Preference for physical gold is the main driver for growth of sovereign gold bond scheme. Bond is issued by RBI on behalf of Government of India. Third question. Opening of demat accounts is a must for sovereign gold bonds. तो आंसर कीजिए इसको. Preference for physical gold is the main driver for growth of sovereign. So answer here is fourth का answer is B, right? Fourth का answer is B. Sovereign gold bonds are government securities denominated in grams of gold. They are substitutes for holding physical gold. Preference for physical gold, need for demat account, lock-in period are all speed breakers to the sovereign success of sovereign gold bond scheme. Statement 1 is incorrect. So ये बाकी की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पढ़ सकते हो और इसका जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा jatinverma.org पे. ये मेरा ब्लॉग है www.jatinverma.org पे आप विजिट कर सकते हो. यहाँ से करंट अफेयर्स की मैगजीन और ये सब भी आपको मिल जाएगा. सो दिस इज इट. क्वेश्चन नंबर 4 का ये बाकी की इंफॉर्मेशन प्लीज इसे पढ़ लेना गाइस. मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ. थर्ड का आंसर बताया ना, थर्ड का आंसर है डी. थर्ड का आंसर इज डी. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. Is it clear? Any other query guys? So fourth भी हो गया. अब now fifth question. Consider the following statement about Scorpion submarines. जो पनडुब्बी आज ये इंडक्ट करी गई है नेवी में करी जाएगी. Scorpion class submarines are a class of nuclear powered submarines. Are they nuclear powered? They are built under the Project 76. Please answer. Now question 5 का आंसर है D. Navy is set to induct the second Scorpion submarine. ये मैंने कल के DNA में समझाया. आप लोग Unacademy पे जतिन वर्मा सर्च करके DNA वॉच कर सकते हैं. तो कल का DNA पूरा कंप्लीट जो 18th of this March का था. Navy is set to induct second Scorpion submarine Khanderi by early May. Scorpion class submarines is a class of diesel electric submarine being built under Project 75. So D क्यों है? क्योंकि none of these is correct. Okay, तो नेवी न्यूक्लियर पावर भी नहीं है और प्रोजेक्ट 76 नहीं, प्रोजेक्ट 75 है. 5 का आंसर डी है. तो मैजेगॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड क्या ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर कंपनी है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस हैव मस्किटोज एज देयर वेक्टर? मस्किटो से मच्छर से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? वेस्ट नाइल फीवर, निपाह वायरस, जीका वायरस.
Please answer question number 6. Sixth का आंसर है सी. So 1 and 3. Okay. मतलब वेस्ट नाइल फीवर एंड जीका वायरस, निपाह वायरस मच्छर मस्कीटो से नहीं होता है. सो दिस इज इट. A 6-year-old boy, the death of it, तो ऐसे निपाह virus is a zoonotic disease. It is transmitted from animals to humans and can also be transmitted through contaminated food or directly between people. In infected people, it causes a range of illness from asymptomatic subclinical infection to acute respiratory illness and fatal encephalitis. The virus can also cause severe diseases in animals such as pigs, resulting in significant economic losses for farmers. So 6th हो गया. Now Zika virus के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे. Complex of the family Flaviviridae. ये family क्या है? Flaviviridae ये family है, ये याद रखना है, right? Flaviviridae. Now 7th question पे आते हैं. Consider the following statements regarding two-sector economy. It means capitalist sector and the subsistence sector. Two-sector economy का मतलब. Second, as per the theory, the living standard of all the citizens in two-sector economies are determined by the wages of people in the subsistence sector. Which of the above statements is or are correct? A. Only 1. B. Only 2. C. Both 1 and 2. D. None of the above. So question number 7. There are 4 options. Choose one of the options, guys. So 7th का आंसर है C. Researchers feel that India does not have a job crisis but a wage crisis. Okay. तो India does not have a jobs crisis, wages crisis है. मतलब पैसे नहीं मिल रहे, जॉब तो मिल रही है, कम दाम पे जॉब ले सकते हो. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. रिसर्चर्स का ये कहना है. नाउ टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है? वेजेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट. तो दिस एक मिनट, देयर इज अ डिसजंक्ट. यहाँ पे इकोनॉमीज क्या कहती हैं? This theory shows that economies such as India and China, which have an infinite supply of labor, there tends to be a two-sector economy, the capitalist sector and subsistence sector. तो जो capitalist sector है, ये basically कार्ल मार्क्सियन theory है friends. ध्यान से समझना. कार्ल मार्क्स ने ये बोला था 2 ही क्लासेस रह जाएंगी, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा सबसिस्टेंस. जो मरने की कगार पे जो लोग हैं वो किसी भी वेजेस पे काम करने के लिए तैयार रहेंगे. कैपिटलिस्ट क्लास उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार रहेगी. तो दिस इज टू सेक्टर इकोनॉमी. लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल सिटीजन इन टू सेक्टर इकोनॉमीज आर डिटरमाइंड बाय द वेजेस ऑफ द पीपल इन द subsistence sector. If there is demand for labor and skills in the capitalist sector, then good supply of labor from the subsistence sector. I'm so sorry about this. So then demand for if there is demand for labor and skills in the capitalist sector, then the good supply of labor from subsistence sector will transition. Wages will ultimately rise only when the demand for labor exceeds the supply of labor in the subsistence sector. Proletariat and bourgeois, middle class. Okay, so this is there. तो ये अंडरलाइंग फैक्टर है. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसे फैक्टर को भी समझो और अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को भी. तो ये क्वेश्चंस इसी वे में बनाए जाएंगे जो स्ट्रिक्टली यूपीएससी के अकॉर्डिंग है. टाइम कभी कम या कभी ज्यादा हो सकता है एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में. माय ऑब्जेक्टिव वुड बी टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स हियर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन एविएशन इंडस्ट्री. Many airlines have been pricing tickets well above the cost of production of a seat. The domestic air passenger traffic has grown at a healthy compounded annual growth rate of about 21% over financial year 2015 to 18. Which one of the above statements is or are correct? A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. None of the above.
जल्दी से क्विक क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करें, इजी क्वेश्चन है। Aman, you can say hi to me also. So this is there. Now 8 का आंसर है B, right? 8 का आंसर is B. As Jet Airways, one of India's largest airlines, hurtled towards bankruptcy, the government today called an emergency meeting with its management. The cash-strapped carrier is struggling to make payments to its creditors and has been forced to cancel hundreds of its flights. तो Indian aviation industry के बारे में ये question था, right? तो this is there. Now 9th question पे आते हैं. Padma Awards are conferred on the recommendations made by Padma Awards Committee. Padma Awards कब दिए जाते हैं? The committee is constituted by A. Prime Minister, B. President, C. Parliament, D. None of these. पद्मा अवार्ड्स कौन सी मिनिस्ट्री देती है, ये भी आप आंसर कर सकते हो। अभिनंदन, नाइस, आपका अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, राइट, तहे दिल से। नाउ पद्मा अवार्ड्स 9th का आंसर है ए, प्राइम मिनिस्टर। द कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद, इंडियन प्रेसिडेंट सॉरी, has recently presented the Padma Awards. Awards are given in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिए जाते हैं। तो ये कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में रहती है, क्लियर। मिनिस्ट्री जो है होम मिनिस्ट्री है, क्लियर। सो पद्मा अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय पद्मा अवार्ड कमेटी मिनिस्ट्री। द कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड एनुअली by the Prime Minister. Padma Awards Committee is headed by, constituted by Prime Minister, headed by Cabinet Secretary, Home Secretary, Secretary to the President, and 4 to 6 eminent personalities are its members. 10th question, which of the following is not a tributary of River Kaveri? Lakshman Tirtha, हेमावती, भवानी, हसदो। अब तुम मत हंसने लग जाना, आंसर करो, तुम रो दो, जितनी स्कोर कम आए तुम रो दो, लीवर का नाम है हसदो। डेली अपना स्कोर इवैल्यूएट करो और चेक करो कि हिंदू पढ़ते टाइम कितना अटेंटिव रहते हो, राइट। तो दिस इज अ 2-way एक्सरसाइज कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज रिवाइज हो जाएगी और हिंदू रिवीजन हो जाएगा और ये पता लगेगा कि हम पढ़ते पढ़ते सोते तो नहीं है, क्लियर। तो अपना अपना टोटल स्कोर पोस्ट कर सकते हो यहाँ पे। टोटल क्या है, यस, यूपीएससी के लिए ये क्लास। सो गाइज प्लीज अपना अपना स्कोर आंसर करो, जिनका स्कोर कम है वो रो दो, बाकी सब हंस दो। 6 on 10 शिवाली, others everybody should post their score। भजन कीर्तन सुनने आए थे तुम लोग। So this is there. Thank you guys. With this we end the today's session. We'll meet again tomorrow at the same time, right? So thanks for watching. Bye bye.